Hello everyone. In this session, we are going to discussing about VUR. So today in this particular session, which is covered inside Palo Alto Certified Network Security Administrator. So today is the lab number 4, and we are covering the VUR deployment. What we are going to discussing today? We are going to discussing about VUR deployment. What is VUI deployment, how to do, and the basic knowledge of VUI deployment in the lab. All things are included in this video. So please watch this video until until the end, and hit the like button and do subscribe for more videos. So if I'm talking about VUI deployment, what is VUI deployment? In our last session we are discussing about whenever we are in deploying Palo Alto firewall. Okay, let's say in organization we are deploying firewall. Let's say the firewall is Palo Alto firewall. There are multiple way to deploy that particular firewall in our production network or network. Okay, what is deployment? Deployment is nothing but how you are configuring your Palo Alto firewall or your network device, how you are configuring inside your network. It is inside your network or it is the board at the border of your network. Okay, so like that, Palo Alto have multiple deployment model. Like earlier, we are discussing about tab deployment model. After that, we are here with VOR deployment model. Out of that, we have layer 2 deployment, layer 3 deployment, HA deployment. There are multiple deployment models or techniques in Palo Alto networks. So, in this particular session, what we are actually going to discuss, we are discussing about VOR deployment model. As VOR name suggests, it is virtual OR model. Virtual OR deployment model. Okay, it is virtual OR deployment model. It is the second deploy model in Palo Alto network. Okay, if I am talking about how it's actually deployed, if we are talking about layer 2, let's say I am talking about layer 2 interface. It layer 2 interface, which kind of address is actually working in layer 2? That is MAC address is working in layer 2. If I am talking about layer 3 interface, which kind of IP, which kind of address is working in layer 3? This is IP address is working on layer 3. But if I am talking about virtual interface, there is no MAC address, no IP address is working in this particular interface. Like if I am configuring VMware in production network or management network, there is no IP address, MAC address required for VMware deployment. Like as Palo Alto is also say, if you are deploy virtual OR deployment in your network, then you no need any kind of IP address, MAC address to deploy VMware model or virtual interface. In simple term, if you are configuring VMware in a Palo Alto firewall, there is no IP address or MAC address actually required. So in Palo Alto network, what is actually VUR? VUR is the combination, or you can say it you can say in layer 2 technology or switching technology, we are discussing Ether channel. In Ether channel, we are bundling one or more than one links and create a logical interface. So like that in VUR, in Palo Alto networks, whenever we are talking about Palo Alto networks, VUR is similar like that. Virtual OR is similar like that. We are actually binding. Let's say there was a Ethernet 1 and there is a Ethernet 2. Actually, we are binding these interfaces plus this. We are actually logically binding this particular two interface. We are logically binding this two interface and create a single interface. That is called VUI. Okay. To do like that, if I am talking about how it's look like, let's see how it's look like. Let's say here you have a router in your network. Let's say this is my router. This is my router. Okay, let's say as you say this is a switch. This is a switch in your environment, and this is a router. This is a switch. This is router, and here is your end devices like end device 1, end device 2, like multiple end devices you can reside in here. This may be like PC, your desktop, your printers. These are the end devices. It's maybe like you can connect this switch to another switch.
and here is your ISP provider. This is your ISP. Okay. Out of that, in this network, what is, let's connect this. These are connected. This is also connected, and this is connected. So in this scenario, what is actually happening? Whenever my LAN segment generate traffic, the traffic was first goes to the switch. After switch, if it is a same VLAN or VLAN related traffic, then switch was handled. But if the network is trying to access another network, then the traffic goes to router. If router have the route, then it forward the traffic to ISP. Or if the router have not any route, then also forward the traffic to ISP towards ISP, just because in your edge router you should have deploy a default route. Okay, so how we can reside in firewall here? So you can configure, let's say this is my Palo Alto. You can deploy Palo Alto here, Palo Alto here, and connect your router to this, to this, like that. So as you know, router run on IP address, switch run on MAC address, and ISP also running IP address and MAC address both, just because these are router and switches. And we know Palo Alto also a layer 3 or layer 4 device. So Palo Alto also required IP address so that it can perform. But no, whenever we are talking about VOR deployment, in VOR deployment, you have not any concept of IP address or MAC address. And also remember, when you are configuring VOR, in your Palo Alto firewall, in your Palo Alto firewall, you you can't use routing and switching feature. Okay, सिंपल सी मैं बात ये कर रहा हूँ, अगर आप लोग पालो अल्टो फायरवॉल में, लेट्स से मेरे पास है पालो अल्टो फायरवॉल है, इसको मैंने अपनी स्विच में, इसको मैंने अपनी बॉर्डर में रख दिया और इससे अपनी राउटर को कनेक्ट किया एंड इससे अपनी आईएसपी को कनेक्ट किया, बीच में रख दिया। बेसिकली ये मेरी इंट्रा जोन हो जाएगी और मेरी लैन सेगमेंट हो जाएगी, ये मेरी वन सेगमेंट हो जाएगी, और इस दोनों के बीच में हम लोग इसको डिप्लॉय करेंगे, फायरवॉल को डिप्लॉय करेंगे। जो एक्चुअल रूल होता है, फायरवॉल को हम लोग कहाँ डिप्लॉय करेंगे? हमारी नेटवर्क और आईएसपी के नेटवर्क के बीच में। क्यों बैठाएंगे बीच में? क्योंकि ट्रैफिक जो हम लोग जो भेजेंगे, जैसे लैन सेगमेंट जो भी ट्रैफिक जनरेट करेगा वो यहाँ फिल्टर होगा, आईएसपी को जाएगा, एंड आईएसपी जो भी डाटा देगा वो पालो अल्टो में फिल्टर होगा एंड मेरे नेटवर्क में आएगा, जो कि एक सिक्योर नेटवर्क हो जाएगा। तो सिंपली अगर उसी हिसाब से मैं बात करूँ, तो पालो अल्टो फायर को चलाने के लिए हमें आईपी चाहिए। ऑफ कोर्स आपने भी देखा होगा आपकी प्रोडक्शन नेटवर्क मैनेजमेंट नेटवर्क में फायर को चलाने के लिए आईपी चाहिए होगा। यहाँ पे नहीं है। क्यों हम लोग क्यों क्या डिप्लॉय कर रहे हैं? VOR डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। VOR डिप्लॉयमेंट वी कैंट यूज IP address or MAC address. We have not any kind of IP address, MAC address requirement. But here is a point. If you are configuring VOR in a Palo Alto firewall, you can't use routing and switching features. Then you also saying me that if you are not using routing and switching features in my Palo Alto firewall, then why we should deploy the firewall? We deploy the firewall for policy enforcement. Okay, we use the, but if I am not running routing and switching features here, but I can do policy enforcement. That means this Palo Alto firewall after deploying VOR, let's say I am deploying VOR in this Palo Alto firewall and we are deploy the firewall as a VOR deployment model. After deploying this firewall, we cannot use routing and switching features inside this Palo Alto. But in this Palo Alto firewall, we can do policy enforcement. That means this Palo Alto firewall can analyze your traffic, block your traffic, and filter your traffic. That means this Palo Alto firewall can protect your network without routing and switching features. This is one of the easiest deployment model in Palo Alto firewall. Okay, but this is the important point. You can't use routing and switching features in VOR deployment model, but you can do policy enforcement. Okay, another thing, if you are deploying VOR deployment model in your Palo Alto firewall, it is practically impossible to detect firewall residing inside your network. That means अगर मैं आपको हिंदी में एक चीज बताऊं, सेम थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट इन हिंदी। अगर मैं अपने नेटवर्क में Palo Alto firewall को डिप्लॉय कर रहा हूँ एज ए VOR डिप्लॉयमेंट मॉडल, देन प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाएगा किसी के लिए डिटेक्ट करना मेरी नेटवर्क में फायरवॉल है या नहीं है। ओके, लेकिन
लेकिन लेकिन हमारे पास एक टेक्निक है जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, फायरवॉल है या नहीं अपने नेटवर्क में डिटेक्ट कर सकते हैं। हमें इस फायरवॉल टू फायरवॉल को अगर मैं व्यू और डिप्लॉयमेंट मॉडल में इंस्टॉल कर रहा हूँ मेरे नेटवर्क में, तो अगर मैं इसके ऊपर LLDP को ऑन करूँ, LLDP क्या होता है, लिंक लेयर डिस्क्रिप्शन प्रोटोकॉल। अगर मैं इस प्रोटोकॉल को ऑन करता हूँ तो मेरी नेबर डिवाइस को पता चलेगा यहाँ पे मेरे पास एक फायरवॉल है। अगर बाय डिफॉल्ट ये ऑन ऑफ रहता है, अगर हमें बाय डिफॉल्ट ऑफ इसे रखूंगा तो इस राउटर को पता नहीं चलेगा ये मेरे और राउट ISP के बीच में कोई फायरवॉल बैठा हुआ है, इसे पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर मैं LLDP रन कर दूं तो यहाँ पे 100 LLDP नेबर करूंगा तो मुझे दिखेगा मेरे पास एक फायरवॉल है, मेरे नेक्स्ट हॉप फायरवॉल है। ओके, अगेन वन इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट, let's say if we are doing trash route over here, let's say I am doing, this host is doing trash route to ISP. So first hop was reach to the switch, second hop is the router, and third hop is Palo Alto firewall, fourth one is my ISP. Is it, are you thinking like that? But here it is not working like that. If you are deploying Palo Alto firewall in vr mode, then Palo Alto firewall not showing that I am a network device. हिंदी में अगर इस चीज को बताऊं, लेट से अगर इस होस्ट ने, ये होस्ट अगर ISP को पिंग ट्रांसरूट करेगा, तो आपको लग रहा होगा पहले मेरी ट्रैफिक स्विच में जाएगा, फिर राउटर में जाएगा, फिर फालोल्टो में जाएगा, फिर ISP में जाएगा, ऐसे ही मुझे रूट देता है ना। अगर आपको TTL के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है तो आप हमसे हमारी सेकंड वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर हम लोगों ने टेलनेट TTL को बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया है। ठीक है, but if you are talking about viewer deployment model, let's say this a host is trying to reach ISP using trust route. Let's say this a host ने क्या किया, ISP को ट्रस्ट रूट किया। तो सिंपली स्विच पे पहले ट्रैफिक जाएगा, राउटर में जाएगा। TTL बेसिकली क्या होता है, जो आपकी नंबर ऑफ पैकेट्स होती है वो -1 करता है, जाके नेटवर्क जिस भी नेट, लेट्स से मेरी ट्रैफिक पहले इस नेटवर्क डिवाइस में जा गया तो ये -1 करेगा, फिर आगे भेजेगा ये -1 करेगा, फिर इस पे गया ये -1 करेगा, फिर इस पे गया ये -1 करेगा और रीचेबिलिटी देगा। ऐसे रीचेबिलिटी दिखता है मुझे जब वो होस्ट हो या फिर नोड में जाके पहुंचते हैं तुम्हारी ट्रैफिक। लेकिन यहाँ पे जैसे मेरी ट्रैफिक जाएगा यहाँ पे, तो -1 है करेगा, ओके आगे फॉरवर्ड करेगा, ये -1 करेगा। जैसे ये ट्रैफिक इसके अंदर से प्रोसेस होगा, यहाँ पे पालो टू फायरवॉल आपकी ना ही राउटिंग कर रहा है ना ही स्विचिंग कर रहा है, तो टीटीएल वैल्यू को माइनस करने के लिए इसे लेयर 2 या फिर लेयर 3 आईपी, लेयर टू एड्रेस या फिर लेयर 3 एड्रेस दरकार चाहिए। ओके, फॉलोड फायरवॉल को TTL वैल्यू के ऊपर, अगर कोई भी नेटवर्क डिवाइस को TTL वैल्यू के ऊपर रेस्पॉन्ड या फिर उसे -1 डिक्रीमेंट करने के लिए खुद की एक IP एड्रेस होना चाहिए ना, इसके पास एक IP एड्रेस होना चाहिए, फिर मैक एड्रेस होना चाहिए, तभी तो ये क्या करेगा, -1 करेगा। लेकिन इसके पास है ही नहीं मैक एड्रेस IP एड्रेस, तो ये अपने आप को एज ए नेटवर्क डिवाइस शो नहीं करेगा, TTL वैल्यू को माइनस नहीं करेगा। तो दैट्स हाउ it is little bit complex to detect is there any firewall residing in my network if the firewall is deployed as a viewer model. Okay, but it is easier when you are deploying when you are enabling LLDP. Otherwise, you have the LLD, low level diagram, so that you can elaborate. Yes, there is a network inside my network. Okay. Out of that, there is nothing else inside this viewer deployment. Viewer deployment is totally easy. अब बहुत ही अच्छे से इसे आप कर सकते हैं, कोई इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। लेकिन इसके अंदर जो कीवर्ड्स है इसे आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे जैसे आप पालो अल्टो फायरवॉल में व्यूअर को अनेबल करेंगे, ये पालो अल्टो फायरवॉल राउटिंग स्विचिंग नहीं कर पाएगा, एंड बट पॉलिसी इन्फोर्समेंट कर पाएगा। प्रीवियसली हमने देखा था अगर मैं टैप मोड पे इसे डिप्लॉय कर रहा हूँ तो वहां पे वो क्या करेगा, एज रीड ओनली पैसिव नेटवर्क डिवाइस के जैसा नेटवर्क को बस मॉनिटरिंग कर पाएगा, ना ही राउटिंग करेगा, ना स्विचिंग करेगा, ना पॉलिसी इन्फोर्समेंट करेगा। ओके, लेकिन वो मेलिशियस ट्रैफिक को डिटेक्ट कर सकता था टैप एंड मोड में। लेकिन सेम चीज यहाँ पे वो क्या करेगा, नेटवर्क को मॉनिटरिंग करेगा, राउटिंग स्विचिंग नहीं कर पाएगा, बट हियर हैव ए एक्स्ट्रा पावर पॉलिसी, ये पॉलिसी अप्लाई कर पाएगा, ट्रैफिक को फिल्टर कर पाएगा। ओके, दैट्स इट ऑल अबाउट दिस। नाउ इसी सेम टोपोलॉजी को हम एज ए एनवायरनमेंट पे लेके चलते हैं, इसकी प्रैक्टिकल करते हैं। ओके, लेट्स गो। सो लाइक दैट एज यू कैन सी, हियर इज माय Palo Alto firewall residing in between router 1 and router 2. Okay, here is my in between my router 1 and router 2, my Palo Alto firewall is deployed, and there is a ISP connection. This is for accessing this Palo Alto firewall is a management interface. Okay, actual environment, here you have not any kind of ISP. Here you have ISP connected with this router. Okay, but I am connecting. Okay, let's see my confusion PC.
This is my PC. I'm accessing this folder firewall using this PC. I am actually changing this logo also. Okay. Okay. This is my PC. Using console or management, I am accessing this folder firewall. Here is my router 1, here is my router 2, here is my PC 1, here is my PC 2, also PC 3, PC 4. This is a network LAN segment 192.168.80.subnet. Here is a LAN segment 192.168.90.subnet. In between router 1, router 2, there is public IP address configure which is 10.1/30, 10.2/30. Also, if as you know, whenever you are asking or request IP address from ISP, it provides /30 subnet. Sometime if your network is larger, much more bigger, then it provides /29/28 IP address. /28 less, very less provided by ISP, but /30 is more, very much provided, very much IP address provided, which is provided by ISP. So now I'm turn on this router, also turn on this router. Now configure the IP addresses. Open this router. Okay, this is a L3 switch actually. You can change the host name, router 1, interface E0/1, no switch port. Why no switch port? No, if you are doing our fundamental class, you know that why we are firing this command no switch port. Okay, IP. That's it. That's it. You have to do over here. Okay. Okay. That's it. IP address configure. Now turn on these hosts. Am I able to ping my gateway? Yes, I am able to ping my gateway. This system is accessing this router gateway. I am accessing my gateway. Okay. So here I am doing static routing. If you are know about static routing, it is very much easier. Otherwise, follow me. This is my router 1, this router. In this router, I am doing static routing. How I can do static routing? Okay, if you are checking the static route, here is a static route available. Now access this router. Okay, here is a static route available. But now this is router to this router. I am ping so IP interface brief. This is 10.2. Am I able to ping the 10.1? Can you told me guys? Let's see. I'm not able to ping just because there is a firewall in between router 1 and router 2, and we have to configure this firewall before make communication possible in between router 1 and router 2. Okay, so let's do.
Here, as you know, as you there see, there was a Ethernet 1/2, Ethernet 1/1 interface, right? So in normal, if you are doing L3 deployment, you have to configure IP address over there. So now we are not doing any kind of L3 interface configuration. We are doing view array configuration, like view array deployment. So we don't need any kind of IP addresses, but we have to decide which is my inside zone, which is my outside zone. Let's say this is my outside zone, this is my inside zone. For more clarity, I am writing this is my inside. Okay, this is my inside, this is my outside. So first you are deciding which is my outside interface or no, which is my inside interface. So this is my outside interface, this is my inside interface, like, and this is my management interface. That nothing to understand in this particular video. So now access this Palo Alto firewall so that we can configure. So I am accessing this Palo Alto firewall. Okay. In Palo Alto firewall, if you are going to interface, these are the interfaces which are previously shown here. Ethernet 1/2, this is my inside. Ethernet 1/1 is my outside. Let's configure Ethernet 1/1 as a outside. So this is 1/1, this is outside. Comment, you can put comment like connected to router 2. You can do that. Here you have to find Ethernet interface type. This is interface type is virtual wire. Okay, NetFlow profile is by default. And virtual wire, there is no virtual wire here. You can create a one virtual wire. This is nothing but this is a group. Inside this group, you are configuring those interface which are participate in VUR membership. Okay, let's say VUR. If I'm talking about in if I'm talking in Hindi, let's say आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे VUR है. VUR बेसिकली क्या है, नॉर्मली ग्रुप की तरह होती है. मेरे पास जैसे आपको अगर बताऊं मैं, यहाँ पे मेरे पास ओके, यहाँ पे मेरे पास दो इंटरफेस है, इथरनेट 1/2, इथरनेट 1/1. अगर मैं नॉर्मली पॉलिसी या फिर वो नॉर्मल रूल लगाऊं तो एक बार मुझे इस पे लगाना पड़ेगा, एक बार मुझे इसमें लगाना पड़ेगा. लेकिन मैं वही सेम चीज अगर मैं आपको और भी इसे आसान शब्द में, मतलब आसानी से बताऊं ना, तो कैसे मैं करना चाहता हूँ. लेट्स से मेरे पास ए है पर्सन 1, P1 मेरे पास एक बंदा है, दूसरा मेरे पास एक बंदा है P2, लाइक, दूसरा मेरे पास एक बंदा है P2. अभी मुझे एक रूल बनानी है. लेट्स आई एम क्रिएटिंग ए रूल सिंपली. लेट्स से चेक स्टेटस करके एक रूल मैंने बनाया. इसके अंदर बहुत सारे कुछ हो सकते हैं, ऐसे वगैरह हो सकते हैं. ये रूल मैंने बना रहा हूँ. ये रूल को मैं इनके अंदर जाकर इसको भी बताऊंगा, इसको भी बताऊंगा. अगर ये दोनों आपस में बात नहीं करते तो मैं क्या करूंगा, एक बार जाके इससे बताऊंगा, एक बार इससे बताऊंगा, राइट. ओके. इसके मदद से मैं और इसे अच्छे से कैसे कर सकता हूँ, मैं एक ग्रुप बनाऊंगा. इस ग्रुप के अंदर इन दोनों को डाल दूंगा. ओके. और इस ये जो पॉलिसी है ना या फिर रूल है, इसे जाके इस ग्रुप को बता दूंगा. तो ग्रुप के अंदर जितने भी मेंबर है इन्हें पता चल जाएगी, लाइक योर व्हाट्सएप ग्रुप गाइस. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, यू आर ट्राइंग टू शेयर एन इमेज टू 5 people. Okay, in traditional way you can share one by one. Okay, how many times you are sharing, you are sharing exactly 5 times. Okay, as your requirement. But सिंगल टाइम में 5 जन को कैसे आप शेयर कर सकते हो, एक सिंपल व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ. लेट्स से मैंने ग्रुप बना दिया समर सीजन, या फिर बैच 1 करके मैंने ग्रुप बना दिया. ओके. और बैच ग्रुप के अंदर 5 या फिर 10 बंदों को मैंने एनरोल कर दिया. अभी कोई भी मुझे अपडेट देनी है, 5 बंदों को मैं पर्सनली नहीं भेजूंगा या फिर वन टू वन, वन बाय वन करके नहीं भेजूंगा. मैं क्या करूंगा, बैच 1 ग्रुप में जाके भेज दूंगा. और वो बाय डिफॉल्ट 5 जन के पास चले जाएगा. क्यों? क्योंकि वो 5 जन जो बंदे हैं वो बैच 1 पे ज्वाइन है. सो लाइक दैट यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इथरनेट 1/2 पे एक बार जाके कोई पॉलिसी डालूंगा, इथरनेट 1/1 पे जाके पॉलिसी डालूंगा. मैं नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, इन दोनों को एक ग्रुप बना दूंगा. तो ये सिंपली अगर मैं यहाँ की बात करूँ ना, ये सिंपली आपको क्या कर रहा है, ये जो यहाँ पे आ रही है, इसको अगर वर्चुअल है, यहाँ पे जो आ रहा है व्यू है, ये बेसिकली ग्रुप बना रहे हो. इस ग्रुप के अंदर आप वो इंटरफेसेस डिफाइन करोगे जिसके अंदर जिसको आप व्यू में डालना चाहते हो. इज इट क्लियर गाइस? तो इथरनेट 1/1 इज माई आउटसाइड जोन. इथरनेट, लेट्स क्रिएट अ व्यू, लेट्स अ वी ओ आर. ओके.
here interface, you have not any kind of interface, just because by default this was mapping automatically whenever you are clicking OK the below banner. So click OK here. Here you are creating viewer. Here the interface type is viewer. Okay, here security zone, you can define security zone here. As per our last session we are discussing zone related concept, but I prefer this way. Go here, this is the, so Ethernet 1/1 is my outside zone. This is my outside zone, right? So write that outside zone and click OK. That's it. And click OK. Okay, here is this is virtual Ethernet. This is outside zone. Then 1/2 is my inside zone, guys. So click OK here. This is my virtual wire. Here now you are showing this viewer which is earlier created for out zone. So now you inside this viewer group you are defining two, you are inserting two interface. One is Ethernet 1/2, another one is Ethernet 1/1. So security zone, this is the last one is outside zone. This is my outside zone, this is my inside zone. So now create outside zone, create inside zone. Okay, click OK and OK. Okay, that's it. You have to do over here. If you are clicking zone, there are two zone, inside zone and outside zone. Inside zone you have Ethernet 1/2. In outside zone you have Ethernet 1/1. You can change this a meaningful way. Okay, like okay. If you are checking viewer, there is a group called viewer. There are two interface automatically defined. If you are clicking that, these interface are earlier there, this is not showing any kind of interface, now it's showing just because it's automatically mapping. Okay, now that's it. So now am I opening this this, and I am trying to ping 192.168.90.10. Am I able to access? No, I am not able to access. Okay, now I can now the basic configurations are done. Now we have to configure the policy. Go to policy template. Inside policy template, you have to define a policy for inbound to outbound traffic and for outbound to inbound traffic. Like you have to create a bidirectional policy. Okay, that means if I'm talking about in Hindi, आपको क्या करना पड़ेगा, आपने बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, इंटरफेस को आपने इनसाइड जोन में डाल दिया, इस इंटरफेस को आपने आउटसाइड इंटरफेस में डाल दिया, और इथरनेट 1/1 1/2 को आपने एक जोन में डाल दिया जो है VOR जोन या फिर वर्चुअल OR जोन पे आपने डाल दिया। बेसिक काम स्टेप 1 आपकी खत्म हो गया। दूसरी स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट पालो अल्टो फायरवॉल में क्या होता है, इंट्रा जोन अलाउ रहता है एंड इंटर जोन बाय डिफॉल्ट पालो अल्टो में क्या होता है, सॉरी, इंट्रा जोन अलाउ रहता है, इंटर जोन क्या रहती है, डिनाई रहती है। ओके, मतलब विद इन ये सिंगल जोन आपकी कम्युनिकेशन अलाउ रहती है, इन बिटवीन जोन आपके कम्युनिकेशन क्या रहती है, बंद रहती है। या फिर जैसे VLAN की अगर बात करूं, विद इन ए VLAN आप बाय डिफॉल्ट कम्युनिकेशन कर सकते हो, लेकिन आपको अगर मल्टीपल VLAN को कम्युनिकेशन करनी है तो आपको SBI करना पड़ेगा। सो लाइक दैट, इनसाइड और आउटसाइड है तो अलग अलग जोन है ना, तो इन बिटवीन अगर इनसाइड में दोनों ही होते तो कम्युनिकेशन हो जाता है, लेकिन अलग अलग जोन में अभी पड़े हुए हैं, एक इनसाइड जोन एक आउटसाइड जोन में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर पॉलिसी बनानी पड़ेगी, इनसाइड से ट्रैफिक आउटसाइड पे जाए। अगर आप सिंगल पॉलिसी डिफाइन कर रहे हो, इनसाइड से ट्रैफिक मेरी आउटसाइड में जाए, तो इस ट्रैफिक को मैं बोलूंगा यूनिडायरेक्शनल पॉलिसी बोलूंगा। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ इन से आउट को भी जाए, आउट से इन को भी आए, सो लाइक दैट, यहाँ से ट्रैफिक यहाँ भी जाए, यहाँ से ट्रैफिक यहाँ भी जाए, इन से आउट को जाए, आउट से इन को आए, तो इसलिए मुझे बायो डायरेक्शनल पॉलिसी बनानी पड़ेगी। तो सिंपली पॉलिसी में बनाता हूँ क्या, इनसाइड टू आउटसाइड। ओके, दैट्स इट। सोर्स इज माय इनसाइड, इनसाइड जोन, कोई भी ट्रैफिक इनसाइड से होगा, डेस्टिनेशन क्या होगा उसकी, आउटसाइड तक जा पाएगा। दैट्स इट, वी हैव टू एक्शन इज परमिट अलाउ अगेन। ओके, I am creating inside to outside. If I am commit over here, let's see. Always remember, guys, whenever you are creating policy, you should clear your vision. You should clear your goals. That's what we should achieve. After that, you can create policy. Okay. As you know, policies approach are like top to bottom. Like in SEL, we are also discussing SEL कैसे काम करता है, top to bottom. फर्स्ट वन एक नंबर पे जो होगा वो पॉलिसी ट्रिगर होगा, उसके बाद सेकंड पे आएगा। लेट से आपने पहले ही कर दिया, एक नंबर पे आप जाके क्या कह रहे हो, होस्ट नंबर ए को ब्लॉक कर दो, तो ब्लॉक कर देगा। ओके, सेकंड स्टेप में आप क्या कहते हो,
एक नंबर जो होस्ट है उससे कम्युनिकेशन बनाओ, तो वो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो पहली जो ट्रिगर हुई थी कमांड, उसमें आपने उसे ब्लॉक कर दिया है। तो हमेशा याद रखना, पॉलिसी की अप्रोच या फिर एसईएल की अप्रोच कैसी रहती है, टॉप टू बॉटम। सो फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन, वेन एवर यू आर वर्किंग इन लाइव एनवायरमेंट और प्रोडक्शन एनवायरमेंट, you should clear it vision. You should fix your goal that what is my output and how we should create that particular uh, policy, you can say. Okay. Now our commit is almost on. Now go to that, and I am doing that. Now, as you can say, traffic is reachability. As my commit was successful, traffic was reachability. Okay. That means this system is able to access this system. 80.10 is actual to actually able to reach 10.90.10. But each 90.10 is able to access 80.10. Let's see, 192, 168. Now 80.10. And as you can see, this packet is dropped. Why? Just because earlier you were deciding only ingress traffic. Inside से कोई भी ट्रैफिक आएगा, आउटसाइड जा पाएगा। यहाँ पे आपने डिफाइन किया है सर। यहाँ पे आपने क्या डिसाइड किया, डिफाइन किया, इनसाइड से कोई भी ट्रैफिक आएगा, आउटसाइड के लिए उसको क्या करो तुम, अलाउ कर दो यहाँ पे। ठीक है। लेकिन आपने तो बायो डायरेक्शनल बनाया नहीं, इस पॉलिसी था, आपने इसको कैसे बना दिया, यूनिडायरेक्शनल बना दिया। मैं घर से बाहर तो जा सकता हूँ, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन बाहर से जैसे ही घर को आऊंगा, दरवाजा बंद कर देंगे। ये तो नहीं है ना सही चीज। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आउट से भी ट्रैफिक को इन पे बुलाना पड़ेगा। इसके लिए दो तरीके हैं, एक तो इसी एसीएल के अंदर आप सोर्स को जाकर फिर से यहाँ पे आउट जोन कर दो। लेकिन अगर मैं करके आपको दिखाऊं, डेस्टिनेशन पे यहाँ पे जाकर इन कर दो। ओके, एक्शन इज अगेन अलाउ। इन से कोई भी ट्रैफिक आउट जाएगा, आउट आउट से कोई भी ट्रैफिक इन पे आएगा तो अलाउ रहेगा। व्हिच इज अगेन, दिस इज पॉसिबल, यू कैन डू दैट, बट दिस इज नॉट द गुड वे। ओके, व्हाई आई जस्ट टोल्ड यू। अगर आप सिंगल एक एसीएल बना रहे हो, अगर सिंगल आप एक पॉलिसी बना रहे हो, उसी पॉलिसी के अंदर, उसी सिंगल पॉलिसी के अंदर आप मल्टीपल चीजों को मैप कर रहे हो, तो अगर एक पॉलिसी, ये पॉलिसी को अगर मुझे किसी कारण बस डिलीट करना पड़ा, तो सारे रूल मेरे हट जाएंगे इसमें। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि जैसे आपने एक ही बकेट में सब कुछ डाल रखा है, ओके, या फिर एक ही टेबल में आपने सब कुछ रखा है, वो टेबल टूट जाए तो सब कुछ फिर खराब हो जाएगा ना आपका, तो लाइक दैट। इसीलिए हमें एज ए नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, एज ए नेटवर्क इंजीनियर, हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा, जितने भी पॉलिसी होंगे सबकी अलग अलग एसईई होगी। हमने एसईएल में पढ़ा था क्या, ये 1 2 3 ये क्या होते हैं, एसई होती है, एक्सेस कंट्रोल एंट्रीज होते हैं ये सारे। ओके। तो हमें अलग अलग बनानी पड़ेगी हर एक चीजों के लिए, विच इज मोर फ्लेक्सिबल। अगर मुझे 3 नंबर लाइन आइटम में कुछ चेंज करना, मैं 3 पे करूंगा, सब में जाके नहीं हाथ मारूंगा। ठीक है। सो लाइक दैट। तो यहाँ में हमने क्या कहा, कोई भी ट्रैफिक होगा इनसे आउट, तो मैं आउट जोन को यहाँ पे डिलीट कर दूंगा। ऐसे आप कर सकते हो, बट दिस इज नॉट रिकमेंडेड फॉर माई माई साइड। ओके, मैं यहाँ पे और एक ऐसी ई बनाऊंगा। पहले हमने कैसे बनाया, इन से ट्रैफिक, सॉरी, यहाँ से सर मैंने आउट को हटा दिया, इन से कोई भी ट्रैफिक, जस्ट अ सेकंड, इन से कोई भी ट्रैफिक आएगा आउट पे जा पाएगा, ये हमने पहले डिफाइन किया था ना। तो अभी मैं डिफाइन करूंगा, आउट से कोई भी ट्रैफिक रहेगा, लेट्स से आउटसाइड टू इनसाइड, कोई भी ट्रैफिक आउट से रहेगा तो वो इनको आ पाएगा, ये सिंपली मैं डिफाइन करूंगा। आपको यहाँ पे पालो अल्टो फायरवॉल में आपको सिंपली मैपिंग करना होता है, आउट से कोई भी ट्रैफिक होगा इन पे, तो एक्शन क्या रहेगा उसका, अलाउ रहेगा। ओके। सो इन से कोई भी ट्रैफिक आउट अलाउ, आउट से कोई भी ट्रैफिक इन अगेन अलाउ। So like that. If I am committing over here, so earlier you were see PC1 is actually able to, so now both are able to ping. earlier क्या हो रहा था, यहाँ से ट्रैफिक यहाँ जा रहा था लेकिन रिवर्स नहीं आ पा रहा था। ओके, मतलब हमने यूनिडायरेक्शनल बनाया था, अभी मैंने इसे बायो डायरेक्शनल बना दिया, तो अभी कम्युनिकेशन हो जाएगा। ओके। एंड इस पूरी प्रैक्टिकल को करने के लिए हमें पालो अल्टो फायरल में ना ही आईपी एड्रेस चाहिए, ना ही मैक एड्रेस चाहिए। ओके। बट हम ट्रैफिक फिल्टरनेशन कर पाएंगे, या फिर पॉलिसी इन्फोर्समेंट कर पाएंगे। ओके। मतलब यहाँ पे हमें राउटर में, सॉरी, फायरल में हमें आईपी एड्रेस मैक एड्रेस नहीं चाहिए, बट हम पॉलिसी को यहाँ पे बना सकते हैं, पॉलिसी इन्फोर्समेंट कर सकते हैं, या फिर पॉलिसी पोस्ट कर सकते हैं, रूल लगा सकते हैं नेटवर्क के ऊपर। व्हाट इज योर कमिट परसेंटेज, ऑलमोस्ट डन। Now as you can see, traffic reachability is
Now done. Okay, now both system are able to access. Okay, now I am actually trying to do 192 1। अब मैं क्या सिंपली करना चाहता हूँ, 192 160 80.10 90.10 को एक्सेस ना कर पाए, इस पर्टिकुलर वन सिंगल आईपी को मैं ब्लॉक करना चाहता हूँ। वो कैसे करूंगा यहाँ पे, ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कैसे मैं ट्रैफिक को भी ब्लॉक कर सकते हैं, या फिर पॉलिसी इन्फोर्समेंट कैसे कर सकते हैं हम यहाँ पे। वो कैसे मैं करूँगा, वो देखते हैं। As you can see earlier both are reachable earlier। Okay, now I am doing, कोई भी ट्रैफिक मेरी इन से जाएगा आउट की तरफ, ओके, वो एक स्पेसिफिक आईपी है, उसको रीचेबिलिटी ना करे, और उस आईपी क्या है, 90.10 है। तो यहाँ पे सिंपली मैं डेस्टिनेशन पे जाऊंगा, डेस्टिनेशन पे जाके सिंपल पे क्या करूंगा, सोर्स इन, यहाँ पे और एक पॉलिसी, जैसे मैंने कहा था आपको पॉलिसी बनानी पड़ेगी, और एक लेट्स से ब्लॉक सिंगल होस्ट, दैट्स इट। एंड source is my inside, like, and destination is my outside, like that। And you have to add IP address 192.168.90.10 is the IP address, that's it। Go to the action, what action I should take if communication established in between 80.10 to 90.10, it's deny। Okay, it's now okay। Okay, there is SE called to ब्लॉक वन होस्ट, कोई भी ट्रैफिक आएगी इनसाइड से आउटसाइड तरफ 90.10 रहेगी, अगर डेस्टिनेशन आएगी उसकी, तो एक्शन क्या लेगा, मेरी पालो अल्टो एक्शन लेगा, उसे ब्लॉक कर देगा। लेट्स सी, इज इट एक्चुअली लाइव और इज इट एक्चुअली राइट। अभी मेरी ट्रैफिक चल रहा है 90.10 को, देखते हैं। एज यू कैन सी the commit was almost done, but still my traffic is reachability। 90.10 को 90.10 से मेरी ट्रैफिक क्या जा रही है, वो आ रही है, दोनों चीज़ें हो रही है। ओके, 90.10 को मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ फ्रॉम VPC3। नाउ फ्रॉम दिस टू दिस इज रीचेबल, बट अर्लियर आवर क्वेश्चन इज VPC3 is not reachable 90.10, but it's not done actually over here। as you can see it's now reachable। so why, there is a issue which we are discuss now। as earlier I said, whenever we are doing policy or SCL, there is a concept or approach which is top to bottom approach। Okay, इसमें हम लोगों ने सिंपल एक फर्स्ट नंबर SCE नंबर वन पे हमने क्या कहा, इनसाइड से कोई भी ट्रैफिक रहेगा आउटसाइड के लिए उसे आप अलाउ कर दो, यहाँ पे हमने दिया ना, अलाउ कर दो। और उसी के जस्ट नीचे जाकर मैं कह रहा हूँ इसको ब्लॉक करो, तो ये नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने रूल को डिसाइड जब हम करें, हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कौन सी रूल ऊपर रहेगी कौन सी नीचे। तो इसको मैं मूव करूंगा, किसको ऊपर मूव करूंगा, तो ट्रैफिक ऊपर गया। अभी कमेंट करूंगा। okay। now you can see the reachability was not happened, the reachability was break। wait a few minutes, after successful committing there was a RTO। okay, why, just because entry number one was first execute। okay, then it go to execute the entry number two if you are allow all the traffic in SCL number one or entry number one, then it can block the same traffic in entry number two। like ऐसा देखो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हो ट्रैफिक ब्लॉक होना आपकी शुरू हो गया धीरे। ओके, अगर आपको सिंपल में बताऊं कैसे, जैसे आपके टोल गेट है, टोल गेट पे आपने पहली जो रूल लगाई, कैसी रूल लगाई, कोई भी ट्रैफिक हो चाहे वो राजस्थान से हो, हरियाणा से हो, दिल्ली से हो, उड़ीसा से हो, सारे ट्रैफिक को आप अलाउ करो, किसी से पैसा नहीं लेना। तो वेल एंड गुड, हमने क्या किया फिर, बैरिकेटिंग जो था उसे हटा दी, सारे ट्रैफिक जाने लगे। सेकंड पे
आप आपके यहाँ पे क्या कह रहे हो कि जितने ये हरियाणा की गाड़ी है उन्हें रोक दो, तो ये हो नहीं सकता क्योंकि मैंने पहले ही रूल लगा दी, बैरिकेडिंग हटा दी है। अभी सेकंड में मैं बैरिकेड बैठा नहीं सकता। As you can see now, this is 99% complete, almost complete, and your traffic is drop. Our traffic is RTO. So as you guys are also have a question, if I'm changing IP address of this particular web system, am I able to access? Yes, of course you can access. Let's change the IP address. So IP earlier IP address 90.10, now 192.90.20/24 192.168.90.1. Now can I access 20.1? 20.90.20? Yes, you can. Here you go. Yeah, 90.10. What is this ID? Okay, let me check. Here you have to put /24. Why /24? We are actually not blocking the entire network. We are blocking a single system. Just wait for the commit. Let's see. Nine dot ten and the IP address. I think the IP address is not changed. 90.20/24 This is 20. Okay, am I able to ping? Okay, so what we have to check our SC, frequency policy, inside the go any traffic. Actually, it's talking about 90.10 single host, exchange spinner. Okay, just wait for it checking the background processes. Okay, earlier we are blocking the entire network. I'm not accessing 90.1. I'm not accessing this also, gateway also. So we have to change that from entire network to a single host. Take little bit time, so stay patient. I'm able to reach the gateway. Okay. Now am I able to access the 90.10? No. Am I able to access the 10.90.20? Yes, I am able to access.
Okay, so what we are covering in this particular session, we are covering multiple things. What we are covering in this session actually, so I am covering, we are covering in this session VOR deployment model in Palo Alto firewall. ओके, और इसमें हमने क्या क्या देखा, इसमें हमने थ्योरी पढ़ा. इन दिस सेशन वी हैव फर्स्ट कवर थ्योरी, व्यूअर होता क्या है. सेकंड हमने लैब किया. लैब के अंदर हमने क्या किया, कम्युनिकेशन करवाया यूजिंग व्यूअर. ओके, सेकंड में हम लोगों ने क्या किया, सेकंड में हम लोगों ने ब्लॉकिंग सिंगल होस्ट भी देखा. Okay, and viewer deployment is the easiest deployment in Palo Alto firewall. You have to do certain steps. What are the steps? These steps are like you have to define inside and outside zone. Okay, and put interfaces in their respective zone. Okay, you have to create a viewer group. Okay, and map respective interfaces. After that, you have to create the policy. You have created bidirectional policy. Bidirectional policy in the sense inside to outside and vice versa. Okay, that's all about in this particular session. We are going to discussing about multiple things in our earlier session, like L2 deployment and L3 deployment. After that, we have to discuss multiple like user account, AAA. There are a lot of things inside in this PCNSA series. So that's all about this. If this video is helpful for you, do comment, like, subscribe. And if you have any question related to viewer deployment, then please let me know using my Telegram channel or Instagram channel. Also, you can WhatsApp me. If out of that anything is not happen, then do comment. I will ensure that you have the particular lab in your EVNG or in your production environment. If you have any doubts, also you can ask me in my Telegram or Instagram channels. Okay, thank you guys.